Hello everyone, this is lecture 322. One article is total energy of liquid. Total energy of liquid is static energy plus kinetic energy plus pressure energy. So यहाँ पर हमने ड्रा किया है, जैसे मान लीजिए एक आपका वेंचुरोमीटर है और ये इसका ये डेटम जो टॉप का है वो जेड हाइट पे है और इसमें पीजोमीटर की वजह से जो प्रेशर आ रहा है पी बाई रो जी ये आपको मिल रहा है और बी स्क्वायर अपान 2g काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो टोटल हेड जो आपका हो यहाँ से डेटम से हो जाएगा जेड प्लस पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर अपान 2g के बराबर होगा। पावर ऑफ फ्लोइंग लिक्विड को अगर आप देखो तो ये आपका फ्री सरफेस है, मान लीजिए ये हाइट h है और यहाँ से v वेलोसिटी से ए क्रॉस सेक्शन से आपका पाइप से ये फ्लो कर रहा है। तो इसमें देखेंगे इसका जो है रो डेंसिटी है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो मीटर स्क्वायर में, बी इज वेलोसिटी और एच इज टोटल हेड, क्यू बराबर क्या होगा ए इंटू बी के बराबर। तो हम डब्ल्यू क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू रो जी इंटू ए बी। A is this will be volume, something volume, and this is your mass. So W, small w into AB, weight of liquid flowing per second. This unit is Newton per second. No, Newton second. So work done per second is W into H. वाट में आ जाएगा, वाट में आएगा। इसका SI यूनिट पावर के क्या होती है, न्यूटन मीटर पर सेकंड, जिसको हम वाट कह रहे हैं, इसलिए WH कहते हैं। अगर आप हाफ पावर में बदलना चाहेंगे तो W इन kg पर सेकंड में जाएगा, तो देन HP जो आपका P होगा WH बाई 75 डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी इन हार्स पावर। सो WH इन वाट में कहेंगे और इसको हार्स पावर में कहेंगे। इस तरह से हम इसको व्यक्त करेंगे। पावर ऑफ जेट, इफ जेट नोजल इज देयर, so power is equal to weight of liquid which is flowing Newton per second into kinetic head. What is the, because of this velocity, what is the kinetic head? So P power equals to W rho g into AB into B square upon 2g, that is rho g AB cube upon 2g, that is rho AB cube upon 2, this is in watt. So P is equal to rho A B cube upon 2 in watt, and if you divide by 75 then this will be HP, that is W A B square upon 2g into 75, yeah, rho A B square into 2 into 75, yeah, this can be converted W A B square upon 2g, W is equal to rho G A B. So we have done this like this, so this is in HP. Now if some pump is there and this is pump, with the pump you are filling this pressure, creating pressure, so your power of jet of pump is equal to W into, because of the pressure P upon rho g. So now this P upon rho g is in watt and P equal to W, and P can be rho g can be converted into small w, unit weight P by W, and this will be divided by 75 will give you horsepower. So in this way we can have some power of jet and power of jet if it is used as a nozzle, as a pump. Thank you for being with me.